जीतू जी जब आप आते हैं ना मुझे डर लग जाता है। मैं अपने आप को यंग समझता हूं पर आप तो हम सबसे छोटे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, द वे यू लुक, योर स्माइल, द वे यू आर यार जीतू जी। गिव इट अप फॉर जीतेंद्र जी प्लीज। मैं क्या कहूं, स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए इनके लिए यार, सब लोग खड़े हो। व्हाट अ मैन, तालियां जीतू जी के लिए, लाउडर। जीतू जी, डू यू सी द लव ऑफ द पीपल? डू यू रियलाइज हाउ मच दे लव यू ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर? आपका प्यार और आपका स्नेह देखकर एक शेर फेंकना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। दिल की हस्ती बिखर गई होती, दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते। जिंदगी आपकी नवाजिश है, वरना हम कब के मर गए होते। Beautiful. Thank you so much. जीतू जी, आप 200 साल बाद भी हमारे साथ रहेंगे, 300 साल बाद भी हमारे साथ रहेंगे, ऐसे ही दिखेंगे क्योंकि हम सबकी दुआएं आपके साथ है। वी लव जीतेंद्र, गिव इट अप फॉर सर। और मैं आपको एक जादू की झप्पी देना चाहता हूं सर, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। जीतू जी, यू गॉट अ लवली फैमिली, यू आर अ ग्रैंडफादर राइट नाउ। थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू सो मच। गिव इट अप फॉर जीतेंद्र। एंड अर्चना, क्या बात है, सब लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। दैट शोज हाउ मच वी लव यू फॉर योर वर्क एंड व्हाट यू आर। गिव इट अप फॉर अर्चना कोचर। Yeah. First of all, I'd like to thank you, Arbaz, for gracing this occasion and adding so much value to this entire event. And most importantly, I would like to call the force behind this entire show today, Smita Thakre, my very dear friend and an awesome human being. Smita ji, please come on stage. We've all said this again and again. In fact, I was talking to Arbaz Bhai also backstage. He says he has a lot of respect and gets inspired by you. Archana does, I do, everyone here. You are doing so much for society as Smita Thakre, as Mukti Foundation. You truly have a heart of gold, and tell us about all the things that you're doing to better our society. Thank you, Siddharth. Thank you so much. Thank you, Archana, and thank you, Arbaz. Of course, on this platform, I would like to talk about Archana and her correction, the contribution what she has been doing for society, and as a designer, she's always been associated with the cause, and of course, even she has a heart of gold. This is the first designer, I think one of the first designer who has been associated with New York fashion designing. And she's in this business, you can call it, for last 20 years. Besides that, whatever the cause which I share with her, dogs and celebrities and fashion, she was so happy to join hands with me. And I'm really, really thankful to all the celebrities whoever have come and raised the support to me and walked here with Archana's beautiful collection. Thank you so much to all of you. Thank you. Yeah, good evening, everyone, and thank you for being present here. First and foremost, thank you, Smita ji, for giving me this honor to be here on this wonderful stage for such a wonderful cause. Archana, thank you very much. I'm wearing a outfit right now, and I've never looked so elegant and princely, I think, so I'm so happy and excited. First and foremost, I would like to thank you for all the lovely causes that you're involved in, and so many things that you do for women empowerment. And it's really remarkable, and you have been doing it for such a long time, and you need to be applauded for that. Thank you. स्मिता जी, इतना दमदार personality stage पर, but with hearts of gold. This is truly the ideal combination anyone can find. They're achievers in their field, but they really do so much for people as well. स्मिता जी, बड़ी इमोशनल फील कर रही होंगी ना आप?
Can I just move a little bit? Yeah. First of all, I would like to thank all the pet lovers and all of them who were here since morning. It was so much heat, but they're still here only because of the love for our pets, animals, dogs, cats. You must be thinking, Mukti Foundation has taken a lot of causes for human beings. Of course, I've been there for AIDS awareness, drugs, women empowerment. This is very close to my heart. And of course, you all must be knowing that I'm really a great pet lover, dog lover, cat lover, animal lover, in fact. I've been associated with animals for when I was like 6 years old. We had a rabbit, a small rabbit, and I was so close and so attached with rabbit. Then I grew, and we found little Bambi, छोटा सा हिरन हमको मिल गया और मैं जिद करके उसको घर पे लेके आई. तो अभी एनिमल एक्टिविटीज़ डेफिनेटली पूछेंगे कि कहाँ मिला आपको, तो ये सब मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पर उसको हमने घर में लेके आए क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था और उसके पैर को लगा था. सो डेफिनेटली थोड़ा अगर वो बड़ा हो गया फिर हमने उसको जंगल में छोड़ दिया. फिर मैं शादी हो गई, हमारे घर पे सभी एनिमल लवर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हमारे घर में थे. तो काफ़ी मेरा बहुत ही क्लोजली एसोसिएशन रहा है एनिमल्स के साथ. अभी ऐसे हमने जब सोचा, मेरी कुकी छोटी सी शिजू थी, वो कुछ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से शी डाइड, एंड इट वाज रियली टच्ड माय हार्ट. एंड I know Sankalp Sharma from Oh My Dog from quite a long time, and we were discussing that we should do something for the greater facilities in India. And we joined hands together. So Oh My Dog and Mukti has joined hands together. We thought of taking this initiative, and I know that there are a lot of celebrities from industry, from film industry to cricket industry, business people. They all love animals. I thought I should gather all of them together and do something which is a different kind of initiative. And I have got tremendous good response from the pet lovers, from all these celebrities. And thank you is really a small word, but I'm really thanking them from bottom of my heart that they've been there always, whatever cause I've been taken. Everybody really believed in what I've been doing it, and thank you God that they will keep on believing in me, and all of you really keep on supporting me. I thank Oh My Dog team. I thank all my team. I thank both the designers. Mahika, of course I've already spoken about Archana. Mahika has been really good friend of mine. I've been always associated with Mahika. She stood by me for AIDS also, for AIDS awareness. So I've been knowing her for quite a long time. Now also she herself is a pet lover and wonderful human being, beautiful designs, and you can see the personalities who are wearing, they all are looking so fabulous. Thank you, Mahika. And thank you each and every person who are associated with this cause, with whoever has made it happen. My family, my parents, everybody support, my friends. I can't thank them enough. Thank you, Siddharth. And all of them, none of them taken a single penny. They've been here only for the cause and only for the love for animals. So I'm really thankful to all of them. Thank you, Sankalp Sharma. Thank you, Oh My Dog. Thank you, Mukti. आ जाओ एली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ एली, बस बेटा, ये एली इतनी देर से समझ, हाँ बस ठीक है.
एली इतनी देर से समझ रही है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ही पालते हैं। इसको मैंने मराठी में भी सिखाया है। बसा इकडे, असं करायचं नाही, चेंडू घेऊन दे। कहने का मतलब है हम कॉमेडियन लोग भी आजकल खर्चा कर रहे हैं। इसको रखना मामूली बात नहीं है। वैक्सीन होती है, शैम्पू होता है, नेल वेल काटे जाते हैं, और जो इसको घुमाता है ये इतनी सुंदर लगती वो कुत्ता लगता है। ये उससे कहती तुम भी कभी नहाया करो। सो एली, हाँ, लेकिन डॉग्स 100 साल से एक बात को लेके बहुत परेशान है। वो कहते हैं इसमें क्या मजा आता है इंसान को, हमें खरीद के ले जाता है घर में, गेट इट, अच्छा लाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंसी है लग रहा है। गया, बॉल लाया, बॉल मुंह में लेके आया और साहब को दे दिया। उसको लगा शायद ये सेटिस्फाइड हो गया होगा, अपनी बॉडी झाड़ में रगड़ रहा है। इतने में उन्होंने फिर बॉल लिया, फिर फेंक दिया। गो गो गेट इट, वापस गो गेट इट, क्या हो गया, गो गो टॉमी गो, गो गेट इट गो, क्या हो गया, इधर आ, इधर आ कमीने, जब तू मंगाता है तो फेंकता क्यों है। हो जाए एक बार जोरदार था।